students, so now we are going to start a mock interview for our student Pratik. This mock is for ONGC and he is from civil engineering background. Okay, Kumar Pratik. So first of all, you tell us about yourself. Yes, sir. So thank you for giving me the opportunity for this interview. My name is Kumar Pratik. I belong to Jamtara district of Jharkhand state. I have done graduation in civil engineering from NIT Jamshedpur, scoring 72%. I have done masters in environment science and engineering from IIT IIM Dhanbad, scoring 79%. During my master's thesis, I worked on the using of satellite data to analyze the sea surface salinity variability in the mangrove forest region, that is the Bay of Bengal region, and I tried to correlate it with the climate change impact on, especially on the Indo-Gangetic plains. So during my free time, I generally go for long walks or I listen to songs. My father, he is a branch manager at SBI Dhanbad. My mother, she is a homemaker. Thank you, sir. Okay, so your father is in State Bank of India, right? Yes, sir. Did not you try to join any bank job? No, sir. As I am in the engineering field, so I haven't tried any bank jobs. Okay. What was the idea behind joining this MTech course? Sir, the idea behind joining this MTech course was to upgrade my skills, sir. So as with proper knowledge in a particular field, it will increase my chances to get a good career in future. Okay. Also, there was some educational gap because in B.Tech, the overall knowledge is provided, but in MTech, you go into more depth. So this helped me to upgrade my skills as well as knowledge. Okay. Any student having MTech or PhD in environment, okay? We have two people. One is Yes, sir. a person working, having MTech degree, master's degree or PhD in environment, and a social activist working for the environment. What will be the difference between their ideology, their thinking, and their working, these things? So an MTech student would be highly technical. His angle of his way of thinking would be more technical, whereas an activist would be thinking the environment also from the point of social issues, the social aspects that the environment provides as benefits, and also MTech student being exposed to industrial causes and benefits, so he will have a different rather he would support industries, whereas an activist would not support industries so much. Okay. Do you know hydrogen-based cars? Yes, sir. Recently, our minister, Sri Gadkari ji, he traveled with a hydrogen car to Rashtrapati Bhavan, to the Parliament. So, which company made that car? So it was made by Toyota. Okay. So, what are the impact of this hydrogen-based car or hydrogen as a fuel on environment? Any idea? Yes, sir. Hydrogen being completely available in abundant quantity, so there would be less amount of money invested in order to procure hydrogen from any other country. So the transportation cost will reduce. So the impact of transportation that crude oil has on environment will reduce. Secondly, the pollution that these crude oils produce while burning the fuel. Uh, with the hydrogen, this is not the case, as hydrogen is a clean fuel, just producing water vapor and carbon dioxide. So this is the another thing.
However, carbon dioxide being a greenhouse gas will lead to increase in global temperature, but So that can can also be taken care. hydrogen fuel based cars or vehicles, can they fulfill the demand of Indian market completely? Sir, at the current stage, I would disagree, but as the cost of production of hydrogen is very high, also the safety related to hydrogen and hydrogen tanks are very high because hydrogen is a very flammable product. So, with regards to safety and cost, I would disagree right now, but with proper research and development in this direction, Okay, can so be tell me one thing, hydrogen is flammable. You said hydrogen is flammable. yes, sir. So means it can catch fire. Is it mean? Yes, sir. Not only it will catch fire, but it might lead to explosion suddenly, So fire is which is not. oxygen. Fire is supported by oxygen. Yes, sir. But we know hydrogen plus oxygen equal to water. So will we add water rain? Sorry, sir. Will we get rain or No, sir. When hydrogen reacts with oxygen, it does produce water, but it's an exothermic reaction, highly exothermic reaction, and leads to huge release of huge amount of energy. This energy will burn the products in which the hydrogen is contained. So it will eventually lead to fire. okay? And now tell me, you after completing your M.Tech in environment, was there any interest created towards this field in your mind that I Uh, should go in depth of this and I should also do something for the environment of this country? So some type of nature of what type of nature these social activists have. So any inclination towards them or towards sir, that profession? sir, I Any would love plan to to be. join such activities in future? Sir, I haven't given a concrete thought about that because I want to apply my knowledge in the industries because if I start being social activist, I would say that the rate of application of knowledge is less. With some support of industry or some support of organization, my rate of application of my theoretical knowledge will be at at larger amount. So I would prefer an industry over joining an NGO or being a social activist in the field of environment. Okay. Why ONGC then? Not any other job? Sir, ONGC is in the field of energy, and today any energy producing organization has its dilemma in three broad aspects: energy, economy, and environment. All the three cannot go hand in hand. So, with me being an environmental engineer, I would like to be part of ONGC because I would then be sitting with an working for the energy organization and also work towards sustainable development by utilizing my skills and knowledge that I have learned over the years in the field of environment. Also, ONGC works in the entire hydrocarbon value chain. So, I would be I would be receiving a number of opportunities with respect to environment. For example, if ONGC is going to explore given well, then it after exploring it needs an environment, or before exploring also it needs environment clearance, and after exploring, if there are chances of great amount of crude oil from that zone, then also it needs further environment clearance. Also, during the drilling phase, ONGC has to make sure that the environmental degradation is least. So the pollution levels are minimized, minimum amount of pollution is released. Uh, and after the drilling phase, ONGC has to make sure that natural habitat is stored Okay. up to some extent by Okay. plantation of Okay. trees. So,
I have a great amount of opportunity when I will be joining as an environmental engineer with ONGC. Okay. Now tell me, uh, why are you suitable candidate for ONGC? Any So, particular strength in your personality which can be very beneficial for ONGC? sir, I'm a quick learner. First, I can tell you by the fact that in a very small amount of time, I have learned softwares like GIS, like MATLAB, the basics of them. Also, while my MTech study was going on, I was very keen in the laboratories work, and I was admired by my professors of doing the laboratories. Uh, so these are the some examples that I can Okay. Any tell you that negatives? I'm. Any Yes, negatives sir. which may Yes, sir. be harmful for us? Sir, being an environmental engineer, you have to work with the top management also, and also with the group, the staffs that are working on the ground. So you need to have very good communication skills. So my communication skill is not mature enough. So I feel that this could be a negative point from my side. But So we over should the time, I'm not recruit improving. you because you already told us the region, main region, Sir, wherever you are highly required, in which area you are highly required by the organization, you are lacking in that. sir, I'm not completely lagging on it. I said ki, I have to improve on that field. My communication skill is not bad, but yes, it is not good enough also. And I'm improving my communication skills, sir. So in how many days you can completely learn these things? Sir, it will depend. First of all, it is person-to-person interaction. So, if I'm So interacting okay, with what from anyone, what time? What since when you are working on this? sir, I have been working since my MTech only. Okay, so it means how many months or years gone? Sir, almost 1.5 years. Okay, so you said you are a quick learner. Yes, sir. So is a person who taking 1.5 year to learn something quick learner? So communication is something that you will learn till the end of your life, because you meet a number of persons in your life, and their behavior and their way of communicating and responding to your behavior is always different. So it's always something that you will keep learning over the years, and you will master it uh, after getting a number of experiences. It is, sir, Okay. I would say. Okay, Ruchin sir, now you can enter. Uh, yes, Pratik, how are you? Yes, sir, I'm fine. Thank Okay. you. So how are you? Acha, I'm also good. Pratik, tell me, what was your MTech thesis about? So my MTech thesis was analysis of sea surface salinity using the satellite data, and correlating it with any climate change impact, especially on the Indo-Gangetic plains. You correlated the sea surface salinity. Yes, sir. Okay. Like, what were your results? Can you give me a brief idea what the results are and all, Pratik? Yes, sir. So when I mapped out the sea surface salinity variation over uh, 6 years Mm-hmm. in the Bay of Bengal region, Mm-hmm. I found out that the variation is very dynamic in nature. And then again, I find out the reasons behind this. There were three reasons. First of all, the southwest monsoon. The Mm-hmm. second is the northeast monsoon, and the third is the unpredictable weather events like cyclones or tsunamis that occur over the Bay of Bengal. And fourth one, not I would not say fourth one, but El Nino and La Nina, some weather events that impact the southwest monsoon Mm-hmm. in. So it is a secondary cause. Okay. So these
these three regions cause very dynamic nature in the variation of sea surface salinity. So I concluded that in order to better understand the picture, we have to go through, we have to study many native species near the mangrove regions, which are highly dependent on the salinity. For example, the mangrove forest itself. So if the salinity is, if their tolerance level for salinity changes, then eventually they will start to die or get extinct, and invasive species will come into that zone. So Okay. that will indicate that the variation. यस प्रतीक, अच्छा आपने ये इसमें बोला है कि सी सरफेस सैलिनिटी है, तो Yes, डज इट हैपन, जस्ट आई वांट टू नो कि क्या जो ओशियन या सी है उसके अंदर सैलिनिटी लेवल टू लेवल चेंज होता है क्या? मतलब सरफेस yes, पे sir. सैलिनिटी कुछ और है, डेप्थ पे जाएंगे तो कुछ और है। Yes, sir. ओके, कैसे चेंज होता है, कुछ आइडिया है आपको? Sir, with the increasing depth, the salinity level increases. सैलिनिटी इंक्रीजेस, ओके Yes, sir. ओके ओके। और आपने इसका इम्पैक्ट देखा है क्लाइमेट चेंज पे? Yes, sir. ओके, आपने क्लाइमेट चेंज में आपने अपने एमटेक के दौरान कुछ ऐसा पढ़ा है, व्हाट इज पॉजिटिव फीडबैक? Sorry, sir, I didn't get your question. मतलब, पॉजिटिव फीडबैक आपने सुना है? like is positive feedback any term, sir? पॉजिटिव फीडबैक इज समथिंग, जैसे आपको, आप मुझे ग्रीन हाउस गैसेस बताएं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं? आई विल गिव यू एन एग्जांपल दूंगा। So CO2, CH4, water vapor, N2O, and chlorofluorocarbons. ओके, These are. अब देखो, आपने इसमें वाटर वेपर बोला है, ग्रीन हाउस गैस है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब वी ऑल नो दैट द टेम्परेचर इज राइजिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, Yes, sir. ओके। और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो सारा क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, करेक्ट? तो जैसे जैसे Yes. टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, हमारा जो वाटर वेपर है वो ज्यादा इवेपोरेट होगा सी सरफेस से, ओके। Yes, sir. अब सी सरफेस से जितना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होता जाएगा, सिंस इट इज ऑल्सो अ ग्रीन हाउस गैस, तो वो वापस क्या करेगा, इनडायरेक्टली टेम्परेचर को राइज करेगा, बिकॉज वो Yes, ग्रीन sir. हाउस गैस है। Yes, अब sir. जितना टेम्परेचर राइज होगा उतना ज्यादा वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर जितना इवेपोरेट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर राइज होता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव फीडबैक, Okay. ओके। अच्छा, टेल मी व्हाट इज एंड ऑफ पाइप सॉल्यूशन? So end of pipe solution is, for example, if I have an industry and I am releasing, say, any particular contaminant. So when the waste is finally leaving with the contaminant, so at the effluent point, I am treating it so that the contaminant concentration reduces. So this is end of pipe solution. Opposite to this, if the particular processes that are causing contaminants in the waste discharge, if I will optimize those processes, so the concentration will decrease. So this is opposite to end of pipe solution. ओके ओके। अच्छा, आपने अपनी लैब में, अपने एमटेक के दौरान लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? Sir, I have done experiment on dissolved oxygen. I have done experiment on BOD. I have done experiment on COD. I have done experiment on pH. I have done experiment on TDS. So these are few I can remember right now. ओके। अच्छा, आपने बीओडी और सीओडी दोनों के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? जी सर। ओके। अच्छा, आपको कभी कोई ऐसा सिनेरियो मिला है क्या जहां पे आपका बीओडी सीओडी से ज्यादा आ गया? नो सर। इज इट इवन पॉसिबल कि ज्यादा आ जाए? No sir, because COD comprises of both biodegradable as well as non-biodegradable organic matter, while BOD is just biodegradable organic matter. Okay. Tell me, what is eutrophication? So eutrophication occurs in water bodies when there is discharge of nutrients in water bodies. These nutrients helps algae to flourish in the water bodies, and this
process is known as eutrophication. सो अगर प्लांट्स उग रहे हैं, एल्गी इज लाइक योर प्लांट्स ना, एल्गी प्लांट ही है, Yes, sir. एल्गी उग रहे हैं, तो ये इससे बुराई क्या है रिवर में? दे आर गुड So ना? when so yes, it has both positive as well negative impact. But eutrophication becomes problem for existing mature ecosystem of the given water body जैसे because uh, because when algae will start to grow, they will first of all take up the space, and they will so, eutrophication. So algae will grow. This algae will take up space, and they will cause the sunlight that was already reaching a particular depth of the water. The sunlight won't be able to penetrate into up to that depth. It will be limited to the topmost depth only. So तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? the सनलाइट नहीं पहुंच पा रही तो उससे क्या इम्पैक्ट है? So the existing system that were utilizing the sun and producing photosynthesis within the water body, so they would एल्गी तो ऑलरेडी है, deplete. एल्गी है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा और वो So, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर ही रहा है. so but those uh, water plants, they would die and create dead biomass, which would be acted upon by organic matter, and which will create unhygienic condition. अच्छा, इंडिया में कोई ऐसी रिवर है क्या जिसपे यूट्रोफिकेशन हुआ है? So I am not sure, but Jamuna might be that river. अच्छा, मुझे बताओ एसिड रेन का फॉर्मेशन, एसिड रेन कैसे होती है? So acid rain happens when sulfur dioxide present in air mixes with water vapor, and when and this water vapor is, or the precipitation when will occur, this will mix, the precipitation will mix with sulfur dioxide present in the atmosphere and create acid rain. तो आपका It कहने can का also मतलब है happen. Yes, sir. SO2 है वो H2O के साथ में मिक्स होगा और वो H2SO4 बनाए. जी सर. अच्छा, कैन यू बैलेंस दिस इक्वेशन? SO2 plus H2O gives H2SO4. Yes sir, I will try, sir. हाँ, ये ट्राई इट आउट, बैलेंस करके बताएं इसको. नहीं सर, नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा? बैलेंस तो होना चाहिए. दिस इज बिकॉज यू नो ओनली द हाफ स्टोरी. SO2 कभी भी H2O के साथ में कंबाइन नहीं कर सकता. Okay sir. SO2 की जगह SO2 first gets converted into SO3. SO2 plus half oxygen, this gives SO3. This SO3 reacts with H2O to form H2SO4. Okay. Now a Yes, question is, ये SO2 से SO3 बनने का जो प्रोसेस है, इसमें एक कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होता है. Do you know any catalyst? Sir, sun rays, they act as catalyst. Okay. Okay, प्रतीक, ठीक है. देखो, आपको नॉलेज बहुत अच्छा है. The way I see it, आपका एमटेक थीसिस इज गुड. एटलीस्ट आपने कुछ नया सा करने की कोशिश करी है. थोड़ा सा एक देखो, इसको एक बार देख लेना. सिंस आपका जो टॉपिक है दैट इज सी सरफेस सैलिनिटी है, तो सरफेस की सैलिनिटी, जैसे मुझे मतलब कंफ्यूजन था, मुझे एक्चुअली नहीं पता.
कि सैलिनिटी ऊपर से नीचे जाते तो कैसे चेंज होता है। आपने बोला जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी, सैलिनिटी बढ़ती जाएगी। उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लो, क्योंकि वो टाइटल पे ही लिखा है, सी सरफेस का सैलिनिटी है, तो Okay. उसमें कुछ सवाल बन सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक Okay, आपको sir. समझ में आ गया होगा। Yes, sir. एंड ऑफ द पाइप सॉल्यूशन इज क्लियर। अब देखो Yes, sir. आपके पॉइंट पे गड़बड़ क्या हो रही है। व्हेन इज योर इंटरव्यू? So 9th of April. 9 अप्रैल को है। देखो आपका पार्ट ऐसा ठीक है, आप क्या कर रहे हो, जो चीज आपको नहीं पता है ना, स्टिल आप ब्लफ कर रहे हो। दिस Okay. इज समथिंग यू हैव टू अवॉइड। जैसे मैंने आपसे यूट्रोफिकेशन पूछा, Yes, यूट्रोफिकेशन sir. क्या है? यूट्रोफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्चार्ज होते हैं रिवर में। तो रिवर के नीचे नहीं, रिवर के सरफेस पर बहुत सारे एल्गी उग जाते हैं। एल्गी सरफेस पर उग रहा है, जमीन, उसकी जमीन पे नहीं, उसके बेड पे नहीं। Yes, sir. तब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर एल्गी सरफेस पे आ गया है तो उसकी रूट्स पानी में है और ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करते हैं लीव्स, वो ऊपर की तरफ है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज है। तो सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब ये जो एल्गी है, ये एल्गी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीजन वाटर में नहीं जा रहा, ये जा रहा है एटमॉस्फेयर में। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके। और दूसरा, अगर सनलाइट नीचे नहीं आएगी तो टेम्परेचर विल रिड्यूस ड्रास्टिकली। ओके। Okay, sir. अब Yes, इसके अंदर आपने आई शुड से दिस वाज अ बिट ऑफ ब्लंडर, कि अगर जैसे आपको नहीं पता पड़ रहा है, स्टिल यूर सेइंग, और आपको यही अवॉइड करना है अब से। ऐसा मान के चलो yes, प्रतीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे 10 सवाल पूछ रहे हैं ना, 10 में से 5 या 6 के ही जवाब दे पाओगे आप। ठीक है, सबके आप okay, नहीं sir. दे पाओगे, बिकॉज द पीपल आउट देयर जो ओएनजीसी के अंदर आपको रिक्रूट करेंगे वो साइंटिस्ट लेवल के, सीनियर सीनियर लेवल के, दे विल बी पीपल। अब उनको आपसे बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, अब वो आपसे जितने भी Yes, सवाल पूछेंगे, जरूरी नहीं है कि आप बता पाओगे। तो मेक श्योर अगर आपको नहीं आ रहा है तो ये सिंपली से नहीं पता। सेम मिस्टेक आपने इसमें भी करी। SO2 प्लस हाफ O2 में SO3 बनता है, तो उसमें कैटलिस्ट कौन सा लगता है? आपने फोटोसिंथेसिस, सॉरी, सनलाइट बोला। जब आपको नहीं पता है, यू डू नॉट हैव टू से, नहीं बोलना है। आंसर इज V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। V2O5. हाँ, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये रिलीज होता है व्हीकल से, व्हीकल्स का जो एग्जॉस्ट होता है उससे Yes, sir. निकलता है, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन वगैरह बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। तो उसमें भी एक ये पार्ट होता है V2O5, कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू निकलता है। सो देखो आपकी गलती ये हो रही है, अगर आपको नहीं पता है इट्स कंप्लीटली फाइन, बिकॉज एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि बीइंग एन एनवायरमेंटल इंजीनियर या बीइंग अ सिविल इंजीनियर आपको सारी चीजें नहीं पता हो। आपके पॉइंट पे मिस्टेक कहाँ हो रही है, आपको नहीं पता है स्टिल आप बोल रहे हो। ओके, दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग जो आपको अवॉइड करना है इंटरव्यू। बिलीव मी, अगर आप 10 में से 5 के भी जवाब दोगे ना, 5 के जवाब आप नहीं दे पाए, बट आपने जो जवाब दिए वो करेक्ट है, और जो आपको पूछा गया आपको नहीं पता है, आप बोले सर आई एम सॉरी मुझे नहीं पता, बिलीव मी 100% आप सेलेक्ट हो जाओगे। गलत नहीं बोलना, नेगेटिव नहीं बोलना, नहीं तो आपका जी इंप्रेशन सर. बहुत नेगेटिव हो जाए। जी सर. ओके, जितना आता है उतना बोलें, नहीं आता है तो क्लियरली मेंशन करें कि सॉरी सर मुझे नहीं पता। और इन केस अगर आपको लगता है कि यार कुछ पार्ट ऐसा है जो कि शायद मुझे पता है बट आई एम नॉट श्योर, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई एम नॉट 100% श्योर सर, बट आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई। ओके, अब वो आपको बोलेंगे यस Yes, यू sir. गिव इट अ ट्राई। अगर आपका गलत होता है देन ऑल्सो इट इज फाइन, क्योंकि आपने बोला है कि यू आर नॉट 100% श्योर। और अगर आप सही बोल देते हो तो दैट्स अ गुड थिंग। Yes. ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई करना। अगर जैसे आपको कैटलिस्ट के बारे में नहीं पता था तो यू कुड हैव सेड सर आई एम नॉट 100% श्योर, बट इफ यू गिव मी परमिशन आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई। ओके। Yes. अब Yes. यूट्रोफिकेशन कहाँ पे हो रहा है? इट्स नॉट इन जमुना, इट्स इन यमुना, और वो भी आपने ब्लफ किया, है ना? देखो Yes. प्रतीक, दे आर वेरी सीनियर लेवल पीपल। आप ब्लफ भी करोगे ना, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि यू आर ब्लफिंग, और फिर वो मजे लेना शुरू कर देंगे, एंड दैट शुड नॉट हैपन। बिकॉज दे विल आस्क यू, उनको अगर जैसे थोड़ा सा भी लग जाएगा ना कि यार आप झूठ बोल रहे हो, आपने किया नहीं है, आपने बस पढ़ रखा है, तो दे विल आस्क यू अननेसेसरी क्वेश्चंस, और वो फिर आपको टॉर्चरस जैसा ऐसा कुछ लगने लगता है ना? सो अवॉइड दैट जी थिंग, एल्स एवरीथिंग इज फाइन। टेक्निकल नॉलेज आपका बहुत अच्छा है, कहीं कोई इशू नहीं है, बस इस चीज को अवॉइड करो, यू विल डू वेरी गुड इन योर इंटरव्यू। जी सर. ठीक है?
ओके प्रतीक। जी सर, एचआर वाला पार्ट का हाँ रिव्यू। यस। बाकी कुछ चीजें हैं तुम्हारी अच्छी हैं, मतलब सोचने की पावर ठीक है, और सभी डायरेक्शन में तुमने आंसर देने की कोशिश करी है। बस एक जगह क्या है कि जैसे कुछ क्वेश्चन के आंसर मतलब बस दे दिए, लेकिन वो उतना अट्रैक्टिव नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एक स्टूडेंट या पीएचडी वाला बच्चा एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है ना, और दूसरा होगा एक सोशल एक्टिविस्ट, तो कोई क्लियर डिफरेंस नहीं कर पाया आप। सिंपल सी चीज है, सोशल एक्टिविस्ट जो होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो क्या करते हैं, वो किसी चीज का अपोज करेंगे। उनको अगर लगता है कि इस चीज से एनवायरनमेंट को खतरा है, उसका वो अपोज करेंगे, उस प्रोजेक्ट का या जी उस चीज का, ठीक है ना। उनका जी काम होता है कि उसमें इन्वॉल्व होना, कि कैसे इसको कम करवाया जाए। लेकिन जो तुम हो, तुम्हारा काम है बताना, उस पर स्टडी करना, रिसर्च करना कि भाई इस चीज के ये नुकसान हो सकते हैं, इससे ये नुकसान होगा, इससे ये फायदा होगा। उसको रुकवाने का काम तुम्हारा नहीं है, समझ रहे ना। ये सर। तुम्हारा सिर्फ काम है कि इसके ये फायदे हैं, इससे ये नुकसान है, और ये चीज यहाँ पे इतना नुकसान कर रही है। एक क्वांटिटेटिव उसका एक आपको आइडिया देना होता है अपनी रिसर्च के थ्रू। बाकी वो रोकेगा कैसे, उसको कौन उसके ऊपर एक्शन लेगा, क्या करेगा, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कोई रोल नहीं है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ ना एक तो। और आपने जहां पे मैंने पूछा आपसे कि सोशल एक्टिविस्ट और ये सब चीजों की तरफ अट्रैक्शन, वो आपने मना कर दिया, तो ठीक है। वो आई बात समझ में। जी सर। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको उस तरीके की आइडियोलॉजी तो नहीं चाहिए। उनको तो और अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आपका काम होगा वहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप किस ये काम में पार्टिसिपेट कर सकते हो कि ओएनजीसी खुद ट्राई करेगा कि एनवायरनमेंट को लॉस कम से कम होगा उनकी एक्टिविटीज के द्वारा। तो आप ये बता सकते हो कंपनी को कि इन चीजों से इतना नुकसान हो सकता है, इतनी चीजों से ये नुकसान हो सकता है, ठीक है। जी सर। उसके बाद बाकी तो तुम्हारा ठीक ही है। और लास्ट में क्विक लर्नर वाले पे जैसे तुम्हें अटका दिया था मैंने कुछ, तो उसका आंसर भी तुमने ठीक ही किया कि ये जो कम्युनिकेशन है ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, मतलब ये कोई लर्न करने वाली चीज नहीं है। तो डेली प्रैक्टिस और जितना डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन करेंगे अकॉर्डिंगली इम्प्रूवमेंट होता है, जी ठीक है। जी सर। तो ये चीज आप चाहे ऐड भी कर सकते हो, खुद ही ऐड कर दो, उनके क्वेश्चन आने से पहले भी कर सकते हो या उनका आने दो। और ओके एक चीज जब मैंने पूछा ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो बहुत लंबी थ्योरी में चले गए आप, ओके सर। उतना लंबा नहीं जाना है, समझे। और जी कहीं पे सर। वो अगर इंटरव्यूअर बोल देता है ओके ओके इट्स ओके, तो वहां पे स्टॉप कर जाओ वहीं पे। बस बोलते नहीं रहना है कि पूरा बोल रहे हो, बार बार वो बोल रहा है कि इट्स ओके, तब भी आप बोलते जा रहे हो। आपको ध्यान रखना है वहां पे, प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। पाँच। चलो, आपको आराम से जाके इंटरव्यू देना है बिना किसी स्ट्रेस के। और थोड़ा सा वो इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो हमने भी नहीं पूछे, जो ये फ्यूल के ऊपर कि भाई अभी जो हम परचेज कर रहे हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है, कहाँ से लेके आ रहे हैं, रसिया पे रेस्ट्रिक्शन लगेंगे तो हमारे लिए फायदेमंद है, नुकसान का है क्या, हम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। इन थोड़ा बिजनेस एक्टिविटीज को भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि इन सब में ओएनजीसी का रोल मेन रहेगा। कहाँ से अरेंजमेंट करना है क्रूड ऑयल का, ये मेन काम है ना ओएनजीसी का। यस सर। तो